Students, today we will discuss about the file system. What is the file system? It is the part of the ICT also. So what about the file system? File system क्या होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ है file system. So first one, our computer system cannot store all the information a user needs. So they just save the information into the प्राइमरी डिवाइसेस और प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस. दैट मीन्स आवर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, वो उसके पास अपना कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है. सो दैट्स वाई दे कैन स्टोर द पर्टिकुलर डाटा, द यूजर्स डेटा, they are saved into the primary memory. But primary memory is a temporary memory, you all know about that. So when we just work on that computer system, that the data will be saved on the RAM, and rather after the closing the work, then the data will be erased. So that's why it's a temporary memory. सो इसे सेव करने के लिए एक सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है, एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज़ हार्ड डिस्क. सो हार्ड डिस्क इज़ जनरली यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली. We can just save the data into the hard disk or the CD or the DVD or the pen drive. There is some external devices. We can just store the data and we can get that data in every time. This is the permanent storage devices. So इसमें जो होता है, जो भी डेटा हम लोग रखते हैं वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्ड डिस्क की. सो हार्ड डिस्क, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क. स्ट्रक्चर हार्ड डिस्क का जानते हैं. इन द हार्ड डिस्क देयर इज थ्री थिंग्स लाइक ट्रैक्स, सेक्टर्स एंड क्लस्टर्स. ट्रैक्स, क्लस्टर और सेक्टर, ये तीनों चीज़ें क्या होती है एक हार्ड डिस्क के अंदर, ये तीनों चीज़ें होती है. जैसा कि हम लोगों ने देखा है हार्ड डिस्क के अंदर जो राउंड शेप सीडी होता है, जैसा हम लोगों ने सीडी और डीवीडी देख रखा है, वैसे मल्टीपल सीडीज जो होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहते हैं. सो उसमें तीन चीज़ें होती है, ट्रैक्स, सेक्टर्स, क्लस्टर्स. सो हम लोग यहाँ देखेंगे ट्रैक्स क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है. सो ट्रैक्स आर concentric circles on a disk where sectors are small sections on each track. जो ट्रैक्स होता है वो कंसंट्रिक सर्किल होता है, एक सर्किल के रूप में बना हुआ होता है, ठीक है, जो ट्रैक होता है. और जस्ट लाइक सीडी पे वो ट्रैक रखा हुआ होता है और वो ट्रैक जैसे जैसे घूमता है उसी को हम लोग ट्रैक बोलते हैं. दैट मीन्स कि एक वे, एक पाथ बना हुआ होता है, एक ट्रैक बना हुआ होता है जिस पर कि जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है. एंड वो जो ट्रैक्स होते हैं, जो ट्रैक्स, एक सर्कुलर ट्रैक्स हो गया, और सर्कुलर ट्रैक्स में भी जो सेक्टर्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं मल्टीपल पार्ट्स में. वो डिवीज़न होता है सेक्टर्स का, यानी कि एक सर्कल मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो. और दूसरा जो क्लस्टर होता है, सो क्लस्टर किसे कहते हैं, और क्लस्टर होता है जो मल्टीपल सेक्टर्स जो हुए, यानी एक ट्रैक पे मल्टीपल सेक्टर्स हो गए, बहुत सारे सेक्टर हो गए, और उन सारे सेक्टर के कॉम्बिनेशन को, सेक्टर के मिश्रित रूप को हम लोग क्लस्टर कहते हैं. दैट मीन्स कि हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक के माध्यम से होता है, और जो ट्रैक होता है वो मल्टीपल सेक्टर्स में बता हुआ होता है. सेक्टर्स मतलब आई थिंक आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे. सेक्टर्स मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये जैसे एक सर्कल हो गया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हर एक पार्ट एक इक्वल पार्ट्स में आना चाहिए. तो इसमें भी यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, लगभग 10 से 12 पार्ट्स होते हैं. तो वो 10 से 12 पार्ट जो हैं इक्वल डिवाइडेड होते हैं, सबका एक इक्वल टाइमिंग होता है, उसके अनुसार वो उसमें रहते हैं, और वो सारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं. नाउ इनटू द हार्ड डिस्क हम लोग बात करें. हार्ड डिस्क को हम लोगों ने देख लिया. नाउ आफ्टर द हार्ड डिस्क देयर इज when we store some data that is from the file. ये जो स्टोर करते हैं हम लोग डेटा, वो फाइल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग, उसी के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है. और फाइल जनरली क्या होता है, फाइल को हम लोग बनाते हैं, एंड दैट फाइल जस्ट शो द डेटा टाइप. दैट मीन्स which type of data into that file. So the icon will be that type. सो जो फाइल होता है उसमें कौन सा डेटा होता है, किस टाइप के फाइल्स को आप बना रहे हैं, वो जस्ट उसके पिक्चोरियल फॉर्म जो इसका होता है आइकॉन का, फाइल के आइकॉन का, सो उससे भी हम लोग बहुत हद तक पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी
फाइल है। एंड इसी एक इसमें और चीज़ें होती है कि ये जो फाइल्स होती हैं ये अरेंज होती हैं कि इसमें फोल्डर्स में। फोल्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, इट कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द फाइल। यू मीन टू से दैट लाइक जस्ट इट हैज़ अ लोकेशन, इसके पास लोकेशन होता है ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। सो होप कि सबको समझ में आ गया कहाँ हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, सी डी हार्ड डिस्क के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। Now the next one is a file system, basic of file system. So there is some facility, there is some functions of file system. So first we discuss about that facilities. So first one is presents a logical and abstract view of file and directory to the users by hiding the physical details of secondary storage devices and the input output operation for communicating with the डिवाइसेस। सो ये क्या करता है, सबसे पहले ये जो फाइल्स और डायरेक्टरी होती है तो यूज़र के सामने वो फाइल्स और डायरेक्टरी की लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट व्यू को डिस्प्ले करता है। बाकी जो डिटेल्स होते हैं, फिजिकल डिटेल्स जो होता है सेकेंडरी डिवाइस का, वो सेकेंडरी डिवाइस के फिजिकल डिटेल्स को हाइड कर देता है। सिर्फ और सिर्फ फाइल्स के लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट व्यू को यूज़र्स के सामने रिप्रेजेंट करता है, ताकि यूज़र जो है जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होता है उसके कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आए और वो ईजी वे में उससे यूज़र जो है आसानी से इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए कम्युनिकेट कर सके। सो नाउ द नेक्स्ट फैसिलिटी इज द इट फैसिलिटेट्स इफिशिएंट यूज़ ऑफ अंडरलाइंग स्टोरेज डिवाइसेज। दैट मीन्स कि स्टोरेज डिवाइसेस के जो अंदर की इफिशियंसी होती है वो उसे यूज़ करता है, उसे और इन्हांस करने की कोशिश करता है, उसे और बेहतर बनाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट शेयरिंग ऑफ फाइल्स अमॉन्ग डिफरेंट यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन mechanism to ensure the information in exchange in the control and secure manner. That means कि it has a capacity to sharing the different types of files to the different types of user and their applications. So ये क्या करता है, ये जो फाइल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स के साथ, मल्टीपल यूज़र्स के साथ और मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ आपके फाइल्स को, आपके डेटा को वो शेयर कर सकता है और सिक्योरिटी के साथ शेयर कर सकता है, ताकि बीच में कोई फाइल का कुछ गलत फ़ायदा ना उठा ले। तो ये सारी चीज़ें होती है फाइल सिस्टम के साथ। And the file name just it's display the all types of information like which type of file that is stored in your drive. So ये क्या करता है कि आपके फाइल्स जो भी स्टोर होती हैं फाइल्स के रूप में, वो सबसे पहले उसका एक नाम होता है और उसका एक एक्सटेंशन फाइल होता है। यानी कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर का फाइल आप सेव करते हैं तो वो अपने एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि जो फाइल है उसके थ्रू अगर आप उसको एक बार देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये फाइल किस टाइप का फाइल है। मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके द्वारा बनाए गए फाइल्स का ईजी वे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इमेज फाइल है तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, उसका आइकॉन्स कुछ अलग होगा। कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका आइकॉन जो है वो डिफरेंट होगा। तो दैट मीन्स कि एक बार आप आइकॉन देख के ही पता कर सकते हैं कि वो फाइल किस टाइप का है। ईच एंड एवरी फाइल हैज सम extension also, there is some extension. When you just see the extension, you have to just mouse over that particular file or just go to the properties of the file. You have to right click on the file and the context menu there is a properties option. You can just go to the properties option, and that properties option contains the extension of the file. वो फाइल का एक्सटेंशन कंटेंट्स किया हुआ रहता है, फाइल कितना साइज़ का है, कौन से टाइप का फाइल है। दे कैन स्टोर ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि फाइल जो सिस्टम है वो फाइल सिस्टम का फाइल जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें, फाइल नेम क्या होता है, फाइल टाइप क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सो द फाइल स्ट्रक्चर दैट इज़ अ फाइल सिस्टम uses a specific structure and system for creating, storing and accessing file. That means कि आप जो फाइल क्रिएट करते हैं उसको क्रिएट करने का, स्टोर करने का और एक्सेस करने का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ रूटीन टू ऐड एंड मैनिपुलेट द data contained into the files. Most files provide the facility to create folder or a directory under which files can be stored. That means कि बहुत सारे फाइल सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक फैसिलिटी होती है फोल्डर क्रिएट करने की अकॉर्डिंग टू देयर फाइल्स। वो फाइल्स के अकॉर्डिंग अपने फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं
सो नाउ इन अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, अगर सबको दिख रहा है पिक्चर, तो पिक्चर में जैसा कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है एंड दैट हायरार्किकल स्ट्रक्चर शो द रूट्स ऑफ द लाइक फाइल्स। फाइल्स का रूट क्या होता है, कैसे फाइल्स क्रिएट होता है, कहाँ पे फाइल क्रिएट होता है। सो दीज आर द सम बेसिक रूट that are predefined into the with the operating system also, like first one, like it display the C drive. So into the our operating system, into the secondary storage memory, there is a different types of drive, like a C drive, D drive, E drive. So we have to just explain about the C drive because the picture is in this screen. So C drives, into the C drive there is a different types of folder, like a program files, windows, fonts, and there are some other folders. There is some folders, not a files. So the into the C drive there is some folders, and into that particular folder there is some files or the folders also. सो ये सी ड्राइव के अंदर क्या होता है, जैसे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और उन सारे फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं। बहुत सारे, जब आप जाओगे उसमें देखोगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, वहाँ पे विंडोज़ फाइल है उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, टेम्प फाइल होता है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं। सो आप जाके देख सकते हैं। सो दीज आर द सम रूट डायरेक्टरी ऑफ द फाइल्स, बट यू कैन जस्ट क्रिएट योर डायरेक्टरी, your folders by go to the different types of drive, like a C, D and E, and then you have to just create the folder, and into the folder you can just put it the file or to create the files. So ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज वी जस्ट से वी नो अबाउट दैट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. We can just create the different types of thing. We just create the settings also. सो अब हम लोग फाइल्स के बारे में देख लिए. नाउ अगेन नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाइल नेम. फाइल नेम के बारे में देखें. सो फाइल नेम होता क्या है? सो व्हेन यू जस्ट क्रिएट द फाइल इनटू द different types of software, like Word, like MS Office Word, like a Notepad. So the different types of software you may create the files. So अगर अब जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, so every file type, when you want to save that particular file, there is some extension. When you just save the file, it has extension file, like you just create the notepad or the text document. So there is a when you save that particular document, then into the file name there is a you have to put some name of the file. जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसका कुछ नाम डालोगे, and in the downward of the file name there is a some file type option. So file type option होता है. So that file type option shows the extension of the file. आप जो भी फाइल टाइप चूज करोगे, वो फाइल टाइप टेक्स्ट हो, वो फाइल टाइप HTML हो, या जो भी फाइल टाइप आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका फाइल उसी तरह का बन जाता है. दैट मीन्स कि यू मस्ट हैव टू पुट द फाइल टाइप वाइल यू सेविंग द वाइल यू क्रिएटिंग द फाइल्स. जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो आपको फाइल टाइप, दैट मीन्स कि आपको फाइल का एक्सटेंशन डालना मस्ट होता है. there is different types of file extension, like .txt, .doc, .docs, like bmp, .jpg, .mp4, .mpeg4. There is a different types of file types. According to the software it will be changed. So while creating the file, you must have to put the extension of the file that shows the file type. In the picture there is some mentioned like extensions, that like some extension shows the which type of file that can store into the folder or the different types of drives. So .exe, that's a executable file. .bat is a batch file. .dll, that shows the drive device driver file. .docs is a Word document. .jpg is a JPG file. .html is a HTML file. .xml is a XML file. So that .mp4 is a video file. .mpeg4 is also a video file. So there is some different types of extension we just discussed into the previous. So you have to just choose one of them and the file will be created according to that particular extension. Now next one is a file path. So file path क्या होता है? File path, that means you can just set the path of the file.
आप अपने फाइल का पाथ सेट कर सकते हो, दैट मीन्स कि वेयर यू वांट टू स्टोर दैट पर्टिकुलर फाइल, आप कहाँ स्टोर करना चाहते हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जो भी आपके पास ड्राइव है, जिस भी फोल्डर में है, जहाँ भी आपको स्टोर करना, यू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर पाथ by opening the save option. So you have to just click the save, then the dialog box appears, save as, you just choose your path where you want to just save the document and just write the name and the file type we have discussed. तो ये file name और file type डालना है, and then you can just save. So after saving that document, the particular files will be created on that location where you save that file. तो दिस इज़ द पाथ ऑफ द फाइल, जो भी पाथ होता है लाइक सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहाँ भी आपको सेव करना है, वो ड्राइव में जाना, वो उसी को हम लोग बोलते हैं पाथ। उसका कुछ एड्रेस होता है, जैसे ही हम लोग सी ड्राइव में, जैसे बाय द वे आपको सेव करना है कि डी ड्राइव में जाके उसमें एक आपने ऑफिस नाम का एक फ़ाइल बनाया या आपने नाम का एक फ़ाइल बनाया और उसमें चाहते हैं बीपीएस नाम का एक फ़ाइल बना दें, तो आपने एक फ़ोल्डर बनाया, अपने डी ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर बनाया, एंड देन फ़ोल्डर बनाने के बाद उसमें अपने बीपीएस नाम से आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया। तो वो जो सी ड्राइव स्लैश फोल्डर नेम एंड स्लैश फाइल नेम, दिस इज़ द पाथ ऑफ योर फाइल. Into this picture there is some files name, there is some files, and it shows their properties also, like png file, it shows the image that has some image. There is some jpg file, so it also shows the image. In the downward of the png there is some paint software, so it shows the this icon is a paint software icon. So each and every types of software, each and every types of file that has some different types of icon, and that icon shows the which type of file it has. The next topic is creating a file, how to create a file. So first we have to just discuss about that. So before we creating the file, we have to just open the, we have to just choose the software, which type of file you want to create, like you want to create a paint file, you want to create a document file, you want to create a text file, or you want to create a image file. So you have to just choose the which type of file you want to create. When we want to create the document, so then we just open the first document software, like Microsoft Word is a software to creating a document. So first we have to just open the Microsoft Word or a Microsoft Excel or PowerPoint also. You have to just create a one of them. So we need to choose the like MS Word, Microsoft Word. So when first we have to open the Microsoft Word, हमें Microsoft Word खोलना है. How to open the Microsoft Word? So go to the program file, and there is a search bar. You have to just search the Microsoft Office or Microsoft Word, or otherwise go to the all program. Into the all program there is a there is a one folder like a Microsoft Office. You have to just click the Microsoft Office button, and then there is a option of Microsoft Word. So click on the Microsoft Word, then the software will be open into your screen. So now write something into your blank area. There is some blank area where you can just type the text. So after creating the document, you have to just write the something, the document will be created. We have to just draw the shapes also. There is a different types of shapes into the insert tab. So you have to just draw the shapes also, and after finishing the document, you need to save the document. आपको क्या करना पड़ता है जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, सो आपको डॉक्यूमेंट सेव करने की ज़रूरत होती है. सो दैट टाइम यू जस्ट गो टू द फाइल, देयर इज ऑप्शन ऑफ सेव. वहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, देन एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एंड द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स. When you just choose the path where you want to save the file, and then there is a two option like file name and the type of the file. So you have to choose the file name and file type. Like you want to just write the name in the like bps, so you have to write the file name bps or your class 10th. So then you can just write the 10th, and just choose the file type. There is a different types of file type, like
MS Word 97 to 2003, and the XML and the rich context. So there is a different types of options like a PDF also, like MPG4 also. So different types of options according to your need. You need to choose one of them, that shows the type of the file. वो जो फाइल टाइप आप चूज कर रहे हो वही आपके फाइल के टाइप को बतलाता है, आपके फाइल के आइकॉन्स को सेट कर सकता है। जैसा आप फाइल चूज करोगे आपका आइकॉन उसी टाइप का, आपका जो फाइल है, फाइल का जो पिक्चोरियल फॉर्म है, आइकॉन है, वो उसी टाइप का बनेगा जो कि आपके फाइल को शो करेगा। एंड देन यू हैव टू क्लिक टू सेव। जैसे आप उसे सेव करोगे तो वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो उस जगह पे सेव हो जाएगा और वो फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज स्टेप टू क्रिएटिंग अ फाइल। एंड वन मोर थिंग, जस्ट हाउ टू ओपन दैन एग्जिस्टिंग फाइल। अब बात करें वो जो फाइल हमने बना दिया उसे अब ओपन कैसे करेंगे। सो देयर इज अ टू प्रोसेस टू ओपनिंग दैट पर्टिकुलर फाइल। So how the first one we need to discuss, first go to that particular like a path where you want to save that particular file. वहाँ पे जाने के बाद जो वो फाइल दिख जाए जो आपने बनाया था, BPS नाम का एक फाइल बनाया था सो वो फाइल जब दिखे तो देन यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट फाइल, सो द फाइल विल बी ओपन। वहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे और वो फाइल ओपन हो जाएगा। या अदरवाइज देयर इज सम अनदर प्रोसेस लाइक जस्ट ओपन द सॉफ्टवेयर। जो जिस सॉफ्टवेयर पे आपने फाइल को क्रिएट किया है उस सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करें एंड जस्ट गो टू द फाइल टैब, देयर इज ऑप्शन ऑफ ओपन। सो ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे ओपन एज डायलॉग बॉक्स आएगा। ओपन एज डायलॉग बॉक्स पे तुम्हारे फाइल का पाथ भी नज़र आएगा। वहाँ पे तुम अपने पाथ को चूज करोगे, जहाँ पे तुमने ड्राइव को, जहाँ भी तुमने अपने फाइल को सेव कर रखा है वहाँ पे फाइल को सेव करने, जहाँ पे आपने फाइल को सेव कर रखा है उसे चूज करोगे एंड जैसे ही फाइल दिखे उसे सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर दोगे तो भी ये फाइल तुम्हारे उस सॉफ्टवेयर पे ओपन हो जाएगा। सो ये दो तरीके थे ओपन करने के, हमने देख लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज folders in computer. So each computer have a different types of folders. It has a multiple types of 1,000 of folder it contains. By default there is some predefined folders and you can also create the different types of folder. So folder is just collection of files, folder where we can just store the files. फोल्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का फोल्डर बनाते हैं हम लोग और अपने फाइल्स के, अपने डेटा के अकॉर्डिंग फोल्डर बना के हम उसमें फाइल्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आइकॉन्स फॉर फोल्डर्स एंड स्टोरेज डिवाइस। तो आई थिंक वी हैव टू जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस, जो आइकॉन्स जो होता है वो फोल्डर्स और स्टोरेज में जो हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करते हैं। सो देयर इज आइकॉन ऑफ लाइक माई कंप्यूटर, यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर। व्हेन यू जस्ट डबल click on the my computer, then platform will be a dialog box open. It contains the different types of drives. When you want to open the drives you have to just choose one of them and double click on the drive. So each and every types of drives contain the different types of folders and that different types of folders contain the different types of files. So it is the root directory of storing the files or the folders, etc. You have to just removable storage device options. So when you just insert any of the removable device like a pen drive, like a CD drive, like an external hard drive, these are some removable storage device. So when you just put on your computer, then the option will be declared into the my computer the dialog box. When you just click on the my computer dialog box, then all the drives display into that particular dialog box. Now the next option is creating a folder. So there is some step how to create a folder. हम लोग folder को कैसे create करते हैं हम इसके बारे में देखेंगे. So first we need to just go to the place where you want to create the folder. So how to go that particular place? So now first we have to just double click on the any types of drive that are opened, and into the drive we have to just double click on the drive. The drive folder drive will be open into a dialog box, and that dialog box contains two panel in the left and the right panel. So in the left panel there is some another folders options like desktop, download, document, music, etc, etc. There is a multiple types of folders it has, and when we choose one of them, the folders will be displayed on the right side of the pan.
So this is the structure. For the creating a new folder, there is two options. Like a first one, into that particular dialog box, just below the address bar, there is a new folder options. वहाँ पे new folder का option होता है. You have to just click on the new folder option, then new folder will be just display into the right pane of the dialog box. So and it will be highlighted by the blue color. ये क्या होता है, blue color से highlighted होता है. So you have to just write the name of the folder. आपको just उसका क्या करना है, folder का नाम लिखना है, and then you have to press the enter. जैसे आप enter press करोगे, the folder will be created. वहाँ पे वो folder create हो जाएगा. और इसका दूसरा प्रोसेस है, जस्ट राइट क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू जस्ट क्रिएट द फोल्डर. सो राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा. व्हेन यू राइट क्लिक, देन इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू देयर इज ऑप्शन ऑफ न्यू. just go through that particular new, your mouse cursor, just move your mouse cursor to the new option. After just mouse over, new options will be just deliver the different types of multiple choice options, and into the choice options there is a option of new folder. so वहाँ पे new folder का option होगा, उसमें से आपको न्यू फोल्डर ऑप्शन चूज करना है. एंड न्यू फोल्डर ऑप्शन चूज करते ही आपके इस राइट पैनल पे वो फोल्डर फिर से डिस्प्ले हो जाएगा विद द हाईलाइटेड ब्लू कलर. एंड यू हैव टू जस्ट राइट द नेम एंड द प्रेस इंटर. वहाँ पे आपको नाम लिख देना है एंड इंटर दबा देना है. तो वो फोल्डर जो है आपके उस पर्टिकुलर ड्राइव में, पर्टिकुलर फोल्डर के भी अंदर जहाँ भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. सो नाउ ओपनिंग ऑफ फोल्डर. सो हम लोग फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं वो भी पहले देख लेते हैं. जस्ट यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर ड्राइव और अ पाथ वेयर यू वांट टू सेव दैट फोल्डर, वेयर यू वांट टू स्टोर दैट फोल्डर. when you want to open that folder, you have to just double click on the folder. यहाँ पे भी दो प्रोसेस होता है, दो बातें देखते हैं हम लोग. फर्स्ट यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक द फोल्डर विल बी ओपन, और अदरवाइज you have to just right click on the folder and then there is option of open into the context menu, or otherwise there is a third option also. You have to just select the folder and press enter. वहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन भी होता है. आप फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर भी प्रेस करेंगे तो भी आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा. सो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. सारी चीज़ें मैंने क्लियर रूप से बता दी है, हर को बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, तो आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेविंग अ फाइल इन अ फोल्डर. हम लोग कैसे किसी भी फाइल और फोल्डर को हम लोग सेव कैसे करते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है सेव कैसे करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को. बट फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो हम लोग फिर से एक बार देख सकते हैं कि हम लोग फाइल्स को कैसे सेव करते हैं, किसी भी फोल्डर में कैसे सेव करते हैं. हम लोग फिर से अगेन यहाँ पे देख लेंगे. तो बिफोर सेविंग द फाइल वी हैव टू जस्ट क्रिएट द फाइल. वी मस्ट क्रिएट द फाइल. सो क्रिएट करने के लिए क्या मैंने प्रोसेस बताया है, किसी भी सॉफ्टवेयर को जिसमें भी हमें फाइल क्रिएट करना है उसको ओपन करेंगे एंड देन उसमें डॉक्यूमेंट एरिया होता है. तो उस डॉक्यूमेंट एरिया में आप फाइल को क्रिएट करेंगे, जो भी लिखना है, जो भी उसमें ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ करेंगे. एंड ड्रॉ करने के बाद अब आप उसे सेव करेंगे. तो सेव कैसे करते हैं हम लोग, जस्ट गो टू द फाइल नेम में जाना है. फाइल टैब में जाने के बाद वहाँ पे आपको सेव या सेव एज का ऑप्शन मिलेगा. मैं तो आपको बता दूँ सेव और सेव एज में क्या डिफरेंसेस है. जब यहाँ पे आ गया तो सेव होता है व्हेन यू जस्ट सेव द फाइल इनटू द फर्स्ट टाइम. जब फर्स्ट टाइम आप फाइल को सेव करते हो, सो द सेव फीचर्स विल बी अप्लाइड और द सेव फीचर विल बी required. And if you want to save the file to the different location with their different types of name, the same file will be saved into the different location and different name. So that time you use the save as option. वहाँ पे आप save as option use करोगे, क्योंकि आप सेव करोगे तो वो जो फाइल है वो उसी में सेव हो जाएगा. That means कि when you just modify that particular the previous file and you want to just save the different types to different location and with their different types of name and the file types also. So that time you have to just choose the save as option. वहाँ पे save as option चूज करना है. तो जो भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करोगे आपको save as डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. सो ओपन होने के बाद आपको क्या चूज करना है, तो आपको वहाँ पे चूज करना है फाइल का पाथ, यानी कि आपको फाइल को सेव कहाँ करना है, वो उस फाइल के पाथ को आप डिक्लेयर करेंगे. लाइक डी ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव में एक फोल्डर बना हुआ है क्लास 10th का, उस क्लास 10th में जाना है, या आपको जो हो जहाँ भी सेव करना हो वहाँ के उस पाथ में जाएंगे.
डबल क्लिक करते ही सारा का सारा फोल्डर, जिस भी फोल्डर पे आप डबल क्लिक करेंगे वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप पाथ को चूज करेंगे एंड देन राइट द फाइल नेम एंड देयर फाइल टाइप आल्सो एंड देन क्लिक टू सेव। फाइल नेम और फाइल टाइप डालना है और उसे सेव पे क्लिक कर देना है। सो जो वो आपका फाइल है वो सेव हो जाएगा उस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ आप सेव करना चाहते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपिंग अ फाइल और अ फोल्डर। सो हाउ टू कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं। सो इसे हम लोग देखेंगे पहले। सबसे पहले बस जस्ट यू हैव टू जस्ट नीड टू गो टू द to that drive. You have to just need to go that particular ड्राइव में जाना है एंड ड्राइव में जाने के बाद आपको जहाँ भी जिस लोकेशन पे आपको आपका वो फाइल है जहाँ से आप उसे कॉपी करना चाहते हो, सबसे पहले यू नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड जब लोकेशन पे आप जाएंगे सो वहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगी। जिस भी फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ से कैसे कॉपी करते हैं हम लोग इसे देखते हैं। सो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द फाइल। there is some process like a 2 to 3 process, so we have to discuss all of them. So first you have to just select the file and press the control plus C. There is a shortcut key to copy the file, so you have to just press the control plus C. So control plus C press करेंगे and then go to that path where you want to paste that particular file or a folder. So वहाँ पे जाना है and then press the control plus B. So this one is a shortcut key, and after the shortcut key we need to know about the basic process to copy or paste. So there is a when you just see the file, you have to just right click on the file. When you right click, there is a option of copy into the context menu. वहाँ पे copy का option होगा, you have to just select the copy option. Just go to that particular drive or a folder where you want to paste that file or a folder, and then again right click, and when you right click there is option of paste. So वहाँ पे paste का option आएगा, you have to just click to the paste option. The file will be pasted on that particular drive or a folder. So वहाँ पे वो फाइल पेस्ट हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं मूविंग फाइल और फोल्डर की। हम लोग फाइल और फोल्डर को मूव कैसे करते हैं। So again there is some process like 2 to 3 process. So we have to just first we discuss the basic process. So just go to that particular drive, just go to the path where you want to save that file, where you want to just cut the file or the move the files. सबसे पहले वहाँ पे जाना है जहाँ से आपको फाइल को मूव करना है। when you see the file, you have to just right click on the file. there is option of cut. वहाँ पे कट का ऑप्शन आएगा, you need to click the cut option. जब आप कट ऑप्शन को चूज करोगे तो वो जो फाइल है वो थोड़ा फेडेड हो जाएगा एंड उसके बाद वहाँ जाना है जहाँ भी आपको अपने फाइल को सेव करना है, उस फोल्डर में या उस ड्राइव में जाओगे एंड देन अगेन there is a blank space. So into the blank space you have to just right click and then there is option of paste. You have to choose the paste into the context menu option. The file will be moved from that place to this place. वो फाइल वहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा. So this is the process of moving, and the shortcut key, you have to just select the file and then press the control plus X. So control plus X is a shortcut key to cut the file from that place, and then again move to that place where you want to paste and then press the control plus V. control plus V आप पेस्ट करोगे so वो फाइल वहाँ से मूव करके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. Now again the next process, next topic is renaming a folder, फाइल और फोल्डर. हम लोग फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं. So again we just go to that particular location, particular path where the file will be saved. So then right click on the file and there is the option of rename. वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होता है. सो रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड रीनेम के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे देन वो फाइल वो क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा विद द ब्लू कलर, एंड राइट द फाइल नेम, राइट द न्यू फाइल नेम एंड देन प्रेस इंटर. And the one more process that go to the organize option into the like dialog box into the folder, there is option of rename also. So you have to just click on the rename option. The folder or a file will be highlighted with the blue color, then write the new file name according to your requirement. Now the next topic is deleting a file or folder. So हम लोग फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं. Just select the file and there is organize option. This is the basic option, organize option, and there is option of delete. So
So you have to click the delete option, then a dialog box appear that shows the you want to delete permanently delete the particular file or folder. So if you click yes, then the file or folder will be deleted. If you click no, the file or folder cannot delete it. The another one process, you have to just select the option and right click select the folder file. You have to just right click on the file or folder. There is option of delete. You have to just click on the delete. Again the message box will be appear, are you sure you want to delete the file or folder permanently? If you click yes, the file or folder will be deleted. No, then it will not delete it. The next option is when you just select the file or folder, and then in the keyboard there is a option of delete, there is a button of delete. So you have to just press the delete button, then again a dialog box will be appear. You have to choose yes or no according to your requirement. Now the next option is restoring a deleted file or folder. That means अगर हमसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाता है, बाय मिस्टेकली हम डिलीट कर देते हैं, येस पे क्लिक कर दिए और वो डिलीट हो गया, सो उसे हम लोग कैसे रीस्टोर करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो व्हेन वी डिलीट सम फाइल और फोल्डर, द फाइल और फोल्डर is go to that particular like a recycle bin. It will like a garbage box. So when you delete some file or folder, it will be just dropped into the recycle bin. So recycle bin से कैसे हम लोग स्टोर करेंगे, रीस्टोर करेंगे उसे, ये हम लोग देखते हैं. So just double click on the recycle bin to open the recycle bin. Recycle bin folder will be open, and then choose the file or folder which you want to just restore. सो डबल क्लिक ऑन द फाइल एंड फोल्डर. उस पर क्या करना है, जाके डबल क्लिक कर देना है. सो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, सो देयर इज ऑप्शन ऑफ रीस्टोर. वहाँ पे आप रीस्टोर का ऑप्शन देखेंगे. आप उस रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. सो वो जो फाइल और फोल्डर है वो रीस्टोर होके जहाँ से डिलीट हुआ था वो अपने होम लोकेशन पे वहीं पे जाके वो फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा. Now the next topic is deleting files or folders permanently. If you want to just delete the file and folders permanently, then what is the step to delete permanently? Like first one हमने पहले देखा, when we delete some file or folder, it will be just go to the recycle bin. So how to just permanently delete from the computer? So there is some step. Just open the recycle bin, then dialog box appear. You have to just select the file and just press the delete option into the keyboard, or otherwise you have to just right click on the recycle bin option. When you right click on the recycle bin option, there is the option of empty recycle bin. So you have to just choose the empty recycle bin option, then all the files will be deleted from the recycle bin and you cannot store those files. Now the chapter will be finished. There is a some topics like a recap, and recap is this: there is some important points, you need to write the important points and learn also. So this is the important point, so you have to write and learn these points. After that there is a assessment time, so you have to just you must be solve these question answer into your homework copy. There is a like a 3 sections. First into the assessment time there is a 3 parts, like A, B and C. So A is a MCQ objective question, B is the true and false, and C is the question answer. So you need to maintain the question answer into your SW copy. अपने SW copy में क्वेश्चन आंसर लिखना मस्ट है, और जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप एक क्लास वर्क कॉपी में या एक अलग से रफ कॉपी में आप इसे मेंटेन कर लोगे, बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे होमवर्क कॉपी में लिखना मस्ट है. सो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कैन लर्न टुडे. हम लोग जो आज हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो पढ़ा, आई थिंक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो जस्ट कॉल मी इन माय नंबर और द व्हाट्सएप. You have to just message me, and if there is one more process, you have to just comment into the YouTube. आप YouTube पे कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं. So thank you, have a good day, stay home and stay safe.